delay, let's just begin our session. So the first news article that we have is related to the Namastey scheme. Now we will try to understand what is this scheme. एंड इस स्कीम से रिलेटेड कुछ और छोटे टॉपिक्स हो जाते हैं जो आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम वो भी देखेंगे. ओके, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज. The government has formulated a national action plan for mechanized sanitation ecosystem. That is Namastey scheme for cleaning of sewers and septic tanks. So ये government ने एक national action plan बनाया है जो कि better sanitation ecosystem से related है, जिसका की काम क्या है, क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक. ओके, एंड ये जो बनाया है ये किसके अंदर है, नमस्ते स्कीम के अंदर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस नमस्ते स्कीम इज ऑल अबाउट. ठीक है, जल्दी से देखते हैं. The scheme is a joint venture of Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Social Justice and Empowerment, and the Ministry of Housing and Urban Affairs. Very important. किसका वेंचर है ये? Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Ministry of Housing and Urban Affairs. तो ये important हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नमस्ते स्कीम है वो किस किस मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स का जॉइंट वेंचर है. नाउ इट एम्स टू अचीव आउटकम्स लाइक जीरो फर्टिलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया. कि जो सैनिटेशन वर्क है उसमें जो कई बार सेप्टिक टैंक वगैरह साफ करते हैं, सीवर साफ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो डेथ रेट है उसको जीरो किया जाए. No sanitation workers come in direct contact with human fecal matter. So कोई भी जो वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए जो ह्यूमन सीक्रेशंस होते हैं उसके. ठीक है. All sewer and septic tank sanitation workers have access to alternative livelihoods. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पास एक ही काम हो, उनके पास और भी ऑल्टरनेटिव वर्क होने चाहिए जिससे उनका लाइवलीहुड चल सके. Then the ministry has shortlisted types of machineries and core equipments required for maintenance work, safety gear for सफाई मित्र. और मिनिस्ट्री ने कुछ इम्पोर्टेंट मशीनरीज और इक्विपमेंट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया है जो कि ऐसे काम के लिए, ऐसे वर्क की मेंटेनेंस के लिए, सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड. ठीक है. अब because we are talking about this particular scheme, we are talking about safety of such workers. तो इसमें एक बड़ा ही important एक concept आ जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का. I hope most of you will be knowing this thing, but ये थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है, क्या क्या इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, एंड ये बैन कब हुआ, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी. देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय हैंड फ्रॉम सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स. सो ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटर है, एक्सक्रीटर्स जो होते हैं, जो मतलब एक्सक्रीट करते हैं हम, जो हमारे बॉडी से निकलते हैं, उसको अपने हाथों से वर्कर्स जो होते हैं सीवर या सेप्टिक टैंक से निकालते हैं साफ कर. सो ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मैनुअल एक्सक्रीशन.
And India has banned the practice under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013. और इंडिया में ये पूरी तरीके से बैन है किस लॉ के तहत? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013. इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली है. The act bans the use of any individual for manually cleaning, carrying, disposing of, or otherwise handling in any manner human excreta till its dispose. Okay. In 2013, the definition of manual scavengers was also broadened to include people employed to clean septic tanks, ditches और railway tracks. So इसको और भी ब्रॉड कर दिया गया. ये बाकी जो 3 कैटेगरीज है इनको भी एड इसमें कर दिया गया. The act recognizes manual scavenging as a dehumanizing practice and cites a need to correct the historical injustice and indignity suffered by the manual scavengers. So ये जो एक्ट है ये इसको एक अमानवीय बिहेवियर या काम बोलते हैं. एंड दे ऑल्सो से कि जो फ्यूचर जो पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ है और जो इंडिग्निटी से सफर करना पड़ा है लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर्स को उसको करेक्ट करने की इट टॉक्स अबाउट. ओके. नाउ ऐसा तो नहीं है कि अभी कोई भी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती इंडिया में. होती है, अभी भी होती है. नाउ व्हाई इज दिस स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक तो सबसे पहला कि लो अवेयरनेस. Manual scavenging is mostly done by the marginalized section of the society and they are generally not aware about their rights. ठीक है, तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग नहीं करते हैं, मेनली मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग करते हैं. तो उनको पता ही नहीं है कि इट इज बैंड. उनको पता ही नहीं है कि उनका ये राइट है कि उनको ये नहीं करने का हक है. So lack of awareness is actually, one of the biggest reasons. Enforcement issues. The lack of enforcement of the act and exploitation of unskilled laborers are the reasons why the practice is still prevalent in India. So this enforcement issue, कि ये तो हम in most of the acts we are seeing this, that there is lack of enforcement of any particular act in country in India in general. And exploitation बहुत ज्यादा होता है, जो unskilled laborers होते हैं उनका. ये एक बहुत बड़ा reason हो जाता है that they are still practicing it even when it is prohibited completely. High cost of automating. The Mumbai civic body charges anywhere between 20,000 to 30,000 to clean septic tanks. So India में जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती है उनसे अगर साफ करवाते हैं तो वो उसकी जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई एंड इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी टू अफोर्ड. नेक्स्ट इज चीपर अवेलेबिलिटी. The unskilled laborers, meanwhile, are much cheaper to hire and contractors illegally employ them at a daily wage of 300 to 500. Now you imagine, एक तरफ आपको देना पड़ेगा 20,000 से 30,000, एक तरफ आपको देना है 300 से 500 रुपए. So people are like this, they want to save the money. Available है तो भाई चलो इनसे ही काम करा लेते हैं. So this is the attitude actually. Caste dynamics. Caste hierarchy still exists and it reinforces the caste relations with occupation.
almost all the manual scavengers belong to the lower caste. So in past, it was, the thing that the occupation is decided on the basis of somebody's caste. Somebody belonging to the Kshatriya family, he will be involved in, military, all of that. Somebody belonging to a Brahmin family, वो पूजा पाठ कराएंगे. So all of that. So जो lower caste के लोग हैं, mainly वही इसमें involved होते हैं, because जो caste system है, that is very much enrooted in our country. So वो हालांकि we are changing with time, but still it is prevalent. Now, what are the various policies and initiatives? Prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation bill 2020. This is a bill as of now. It proposes to completely mechanize sewer cleaning, introduce ways for on-site protection, and provide compensation to manual scavengers in case of sewer death. दो बातें हैं इसमें. एक तो ये प्रपोज करता है कंप्लीटली मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है. दूसरी बात, कंपनसेशन मिले एंड प्रोटेक्शन मिले मैनुअल स्कैवेंजर्स को अगर कोई डेथ का केस हुआ है, और अभी ये एक्चुअली बिल ही है. Now, prohibition of employment as manual scavengers and their Prohibition Act 2013, जिसके हमने पीछे भी बात की. Superseding the 1993 Act, the 2013 Act goes beyond prohibition on dry deterrence and outlaws all manual excrement, cleaning of insanitary latrines, open drains or pits. So इसमें क्या होता है? ये सब it actually talks about prohibition of almost everything. So ये सारी चीजें इसमें involved. राष्ट्रीय गरिमा अभियान. It started national wide march. मेल मुक्ति यात्रा. So ये बड़ा ही important है. ऐसे नाम कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान किस चीज से रिलेटेड है. For total eradication of manual scavenging from 30th November 2012 from Bhopal. Okay, so this वैसे पुराना है, but फिर भी ऐसे नाम आ जाते हैं कि ये अभियान किससे रिलेटेड. So थोड़ा सा आइडिया होगा इसको. Then we have Prevention of Atrocity Act. In 1989, the Prevention of Atrocities Act became an integrated guard for sanitization workers, since majority of manual scavengers belonged to the scheduled caste. Okay, so 1989 mein there was this act. Actually, this act came and this became the integrated guard for all the sanitation workers, and because most of them were belonging to SC caste. Now, what is the compensation given to them? So, as per the Prohibition of Employment Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013 and the Supreme Court's decision in the Safai Karamchari Andolan versus Union of Indians case, a compensation of 10 lakh is awarded to victim's family. So the compensation is according to this act and the case which was there in the Supreme Court, the compensation of actually 10 lakhs is awarded to the victim's family. Okay, now what is the way forward? What can be done? What are the shortcomings? All of that. Regular service and social audits must be conducted against the involvement of manual scavengers by public and local authorities. So सर्वे होनी चाहिए, ऑडिट्स होनी चाहिए कि कितने लोग एक्चुअली अभी भी इन्वॉल्व हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग में. ओके, सो ये सब पता करके फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, उनके काम से उनको हटाना चाहिए. एंड ये जो कंपनसेशन वगैरह की बात है ना, कि कंपनसेशन मिलना भी इज नॉट इजी. There must be proper identification and
capacity building of manual scavengers for alternative sources of livelihood. ये तो हम देख ही चुके हैं. Creating awareness about the legal protection of manual scavengers is necessary. So creating awareness is very, very important. कि उनको क्या क्या protection मिल रहे हैं and what all. Okay. So with this, we have come to an end to this particular news. Now let's move to the another news for today, which is related to the announcement of Indian citizenship. Okay. Now, what is this related to? Over 1.6 lakh Indians renounced their citizenship in 2021, which is highest in the past 5 years. So, according to information provided by the Ministry of Home Affairs, 1.6 लाख लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजन को छोड़ दिया है, जो कि हाईएस्ट है लास्ट 5 years में, एंड देयर डेस्टिनेशन इज मेनली यूएस. तो जिन लोगों ने भी छोड़ा है मेनली वो सारे यूएस ही गया. Over 78,000 Indians acquired the US citizenship, the highest amount among all the other countries. So सबसे ज्यादा जो लोग गए हैं 1.6 लाख में से 78,000 जो लोग हैं उन्होंने यूएस सिटीजनशिप अक्वायर की है इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर. India does not allow dual citizenship, okay, and Pakistan does allow. As many as 362 Indians living in China also acquire Chinese citizenship. और जो चाइना में 362 इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने भी चाइनीज सिटीजनशिप अक्वायर की है, पर सबसे ज्यादा किसने की? यूएस में. ओके. नाउ let's try to understand the role and the works of citizenship in India. Citizenship is in the union list under the constitution and thus under the exclusive jurisdiction of parliament. So ये जो है citizenship वो union list में आती है. Only the central government can work in this respect. The constitution does not define the term citizen, but gives in Article 5 to 11 details of various categories of persons who are entitled to citizenship. जो टर्म सिटीजन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है हमारा, बट आर्टिकल 5 to 11 में इसके बारे में डिटेल इसकी कैटेगरीज दी गई है दैट हु कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. Unlike other provisions of the Constitution, which came into being on January 26, 1950, these articles were enforced on November 26, 1946 itself when the Constitution was adopted. So, जैसे कि बाकी सारे Constitution provision लागू हुए, similarly ये भी उस टाइम पे लागू हुआ. Now, various provisions for Indian citizens. ओके, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की क्या क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं इन आवर कंट्री. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सबसे पहला वी हैव इज आर्टिकल 5. इट प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी से सिटीजनशिप की बात है. All those domiciled and born in India were given citizenship. तो जो भी सब इंडियन डोमिसाइल हैं या फिर इंडिया में पैदा हुए उन सबको सिटीजनशिप मिली. Even those who were domiciled but not born in India, but either of whose parents was born in India were considered citizens. जो इंडिया में रह रहे हैं पर पैदा नहीं हुए हैं और उन दोनों के पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन है तो फिर उनको सिटीजनशिप मिल सकती है. Anyone who had been an ordinary resident for more than 5 years was entitled to apply for citizenship. कोई भी इंसान अगर रह रहा है इंडिया में 5 साल से ज्यादा तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है. Now let's try to understand what they say about citizenship in Article 6. Since independence was
preceded by partition and migration. Article 6 laid down that anyone who migrated to India before July 19, 1949 would automatically become an Indian citizen if either of his parents or grandparents was born in India. So partition because हुआ था तो बहुत सारे लोग इधर उधर हुए, बहुत सारा माइग्रेशन हुआ. तो अगर कोई भी इंडिया में 19 जुलाई 1949 से पहले आगरा में आया है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाता है अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडियन है. But those who entered India after this date needed to register themselves. But ये 19 जुलाई 1949 के बाद जो भी आए हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है. Article 7. Even those who had migrated to Pakistan after March 1, 1949, but subsequently returned on resettlement governments were introduced within the citizenship net. मतलब कुछ ऐसे लोग जो मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, वहां माइग्रेट हो गए थे, बट देन वापस वो रीसेटलमेंट के लिए अगर इंडिया आ गए तो उनको भी सिटीजनशिप दी जा सकती है. ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट है कि किस केस में इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी किसी को, तो ये इस आप थोड़ा ध्यान से ही पढ़े. ओके. The law was more sympathetic to those who migrated from Pakistan and called them refugees than to those who, in a state of confusion, were stranded in Pakistan or went there but decided to return soon. ये क्या कह रही है ये लाइन कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे और जिनको रेफ्यूजी कहा जा रहा था उनकी तरफ ये जो लॉ था वो ज्यादा ही सिंपैथेटिक था एज कंपेयर टू दो जो कि बहुत ही कंफ्यूज थे कि भाई कहाँ जाए, जो पाकिस्तान चले गए फिर वापस आ गए रिटर्न, तो उनके लिए उतना फ्लेक्सिबल नहीं था. बट इट वाज मोर सिंपैथेटिक फॉर दोज who were migrating and who were called as refugees. Now, Article 8. Any person of Indian origin residing outside India who or either of whose parents or grandparents was born in India could register himself or herself as Indian citizen with Indian diplomatic mission. So कोई भी इंसान जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया से बाहर रह रहा है और उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन बॉर्न है, सो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज इंडियन सिटीजन. Now various amendments for citizenship. So there have been various amendments related to citizenship. What are they? Let's try to understand. According to Article 11, Parliament can go against the citizenship provisions of the Constitution. So Article 11 जो है वो बात करता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो citizenship provision है उसके अगेंस्ट में it can go and do some change. The Citizenship Act 1955 was passed and has been amended 4 times in 1986, 2003, 2005 and 2015. The Act empowers the government to determine the citizenship of persons in whose case it is in doubt. ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो डिटरमाइन करे सिटीजनशिप ऑफ पर्सन जिस केस में डाउट हो. तो गवर्नमेंट विल डिसाइड. गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर.
या ओके, सो गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड करेगी जहां पे भी सिटीजनशिप को लेके डाउट होगा. However, over the decades, Parliament has narrowed down the wider and universal principle of citizenship based on the fact of birth. ठीक है. Moreover, the Foreigners Act placed a heavy burden on the individuals to prove that he is not a foreigner. तो कुछ एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं. अच्छा, हमने जो ये पीछे बात की थी ना, that the Citizenship Act 1955 ये अमेंड हुआ है 4 बार. देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की बात हुई है. 1989 का अमेंडमेंट, the constitutional provisions and the original Citizenship Act gave citizenship on the principle of just solely to everyone born in India. So जो भी इंडिया में पैदा हुए हैं उन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है. दिस वाज द basic provision. However, a 1986 amendment to Section 3 was less inclusive as it added the condition that those who were born in India on or after January 26, 1996, but before July 1, 1987 shall be an Indian citizenship. तो ये क्या बोलते हैं कि जो भी इंडिया में पैदा हुए जनवरी 26 जनवरी 1950 से पहले, सॉरी के बाद, और जुलाई 1, 1987 के पहले, तो जनवरी से जुलाई 1896 तक इस फेज में जो भी पैदा हुए इंडिया में वो इंडियन सिटीजन है. Those born after July 187 and before December 2003, in addition to one's own birth in India, can get citizenship only if either of his parents was an Indian citizen at the time of birth. So अगर इस फेज में पैदा हुए हैं जुलाई 1987 के बाद और दिसंबर 2003 से पहले, तो फिर उनको सिटीजनशिप तभी मिल सकती है जब उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक हो इंडियन सिटीजन. 2003 का क्या अमेंडमेंट? The then government made the above condition more stringent, keeping in view infiltration from Bangladesh. So बांग्लादेश से जो माइग्रेशन हो रहे थे, जो लोग आ रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन. Now the law requires that for those born on or after December 4, 2004, in addition to the fact of their own birth, both parents shall be Indian citizen or one parent must be Indian citizen and other should not be an illegal migrant. फिर इसमें जो अमेंडमेंट किया उसमें कहा गया कि जो 2004 दिसंबर से पहले के बाद जो पैदा हुए हैं, अब उनकी जो अगर वो इंडिया में पैदा भी हुए हैं तो उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं या तो दोनों भी इंडियन सिटीजन हो या फिर एक इंडियन सिटीजन हो, पर दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. So this was the condition so that they can control the illegal migration in the country. With these restrictive amendments, India has almost moved towards the narrow principles of just sanguineous or blood relationship. This laid down that an illegal migrant cannot claim citizenship by naturalization or registration even if he has been a resident of India for 7 years. Okay. 2019 का क्या अमेंडमेंट हो गया? The amendment proposed to permit members of 6 communities, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christians from Pakistan
Bangladesh and Afghanistan to continue to live in India if they entered India before December 14, 2014. Okay, so इस पे तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम. ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मेंबर्स ऑफ दी 6 कम्युनिटीज हैं, अगर वो इंडिया में 14 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो वो रह सकते हैं. सिर्फ ये 6 कम्युनिटी के लोग. It also reduced the requirement for citizenship from 11 years out of the preceding 14 years to just 6 years. Okay. 2 notifications also exempted these migrants from the Passport Act and Foreign Act. A large number of organizations in Assam protested against this bill as it may grant citizenship to Bangladeshi Hindu illegal migrants. So because ये क्या बोलती है, सीधी सीधी बात बोलते हैं कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं 14 दिसंबर 2014 के पहले, वो इंडिया में रह सकते हैं. They will have the citizenship rights. तो फिर इसमें इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि आसाम में जो लोग थे they were saying कि बांग्लादेश से जो हिंदू इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो भी आराम से रह सकते हैं. ओके, now how the citizenship in India is loose. The Citizenship Act 1955 also lays down that the 3 modes by which an Indian citizen may lose his or her citizenship. It may happen if any of 3 ways: renunciation, termination and deprivation. Okay, तो एक एक करके देख लेते हैं. Renunciation क्या है? Renunciation is an Indian citizen of full age and capacity can renounce his Indian citizenship by making a declaration to that effect and having its registration. So जैसा कि हमने देखा, जो ये news है related to the news is related to this thing only कि 1.6 lakh Indian ने they have renounced their citizenship and किसी और country की citizenship ले लिए. But if such a declaration is made during any war in which India is engaged, the registration shall be withheld until the central government otherwise directs. But ऐसी कोई condition जिसमें कि कोई war चल रहा हो या इंडिया ऐसे किसी war में बैटल में engage है, उस समय ये जो registration का काम है ये इंडियन गवर्नमेंट withdraw कर सकती है जब तक कि उनको लगेगा. When a male person renounced his citizenship, every minor child of him ceases to be an Indian citizen. अगर किसी मेल पर्सन ने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप किया है तो उसके जो भी माइनर बच्चे होंगे उनकी सिटीजनशिप भी जाती है. Such a child may, however, resume Indian citizenship if he makes a declaration to that effect within a year of his attainment full age of 18 years. और ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को फिर वापस कभी सिटीजनशिप मिल नहीं सकती. They can attain the citizenship. वो डिक्लेयर कर देंगे और जैसे वो 18 के होते हैं उसके 1 साल के अंदर they want to do it, they can attain. Now, what is termination? If a citizen of India voluntarily acquires the citizenship of another country, he shall cease to be a citizen of India. अगर किसी इंडियन सिटीजन ने अपने मन से कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो वो अपने आप उसकी जो इंडियन सिटीजन है वो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है. During the war period, this provision does not apply to a citizen of India who acquires the citizenship of another country in which India may be engaged. So during war, it actually does not apply. Now, third one is deprivation. So deprivation is a compulsory termination of citizenship of India.
A citizen of India by naturalization, registration, domicile, and residence may be deprived of his citizenship by an order of the central government if it is satisfied that the citizen has obtained the citizenship by means of fraud, false representation, or concealment of any material fact. ऐसे केसेस में जब किसी इंसान ने सिटीजनशिप गलत तरीके से हासिल की है, कोई फ्रॉड काम किया है, कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की है, तो उनकी जो सिटीजनशिप है वो हटाई जा सकती है. शोज डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि डिसलॉयलिटी शो करता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तब भी हटाई जा सकती है. अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर. अगर किसी भी वॉर की टाइम में कुछ कम्युनिकेट कर दिए सीक्रेट चीजें या कोई अनलॉफुल ट्रेड कर दिया, तब भी within 5 years after registration or neutralization be imprisoned in any country for 2 years. अगर रजिस्ट्रेशन के 5 साल बाद या न्यूट्रलाइजेशन के 5 साल बाद इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, जेल हो जाती है किसी दूसरी कंट्री में, तब भी 2 साल तक के लिए अगर हो गया. ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years continuously. अगर 7 साल तक किसी और कंट्री में रिजाइड कर रहे हैं, तब भी जो है सिटीजनशिप ली जा सकती है. ओके, so with this we have come to an end to our daily current affairs for today. Now quickly we will see the questions for practice that we have today. Okay, so the question that we have is, which day is celebrated as the International Chess Day? This is important, International Chess Day. Options are 29 March, 1st April, 17 July, 20 June. 17 June है and 20 July. Okay, so ये easy है क्योंकि कल का ही दिन था. So 20 July. Okay, so every year July 20 is celebrated as International Chess Day to honor the establishment of International Chess Federation in 1924. So International Chess Federation कब आया? 1924 में. The idea to celebrate the day was proposed by UNESCO, and since 1966 the day has been celebrated every year. So 1966 से ये दिन celebrate हो रहा है. International Chess Federation, which has 181 chess federations as its members, organizes chess events around the world on this day. So 181 जो है चेस मेंबर्स हैं फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में. And the International Chess Federation is referred to as FID because of its French acronym Fédération Internationale des Chess. Okay, अगर कुछ गलत पढ़ा हो मैंने, because I don't know French. So yeah. So with this end, we have come to an end to our daily current affairs for today. I'll meet you very soon tomorrow with our daily current affairs session with some very important news followed by very important questions. Till then, please keep studying and work hard. I'll see you soon. Thank you so much.